are going to begin with the lesson number 7 of your class 8 science, that is conservation of plants and animals. So let's begin with this lesson. Here's the introduction of this chapter. Our earth provides a rich habitat of plants, animals and microbes. हमारा जो अर्थ है rich habitat किसको provide करता है? Plants को, animals को और microbes को. These living organisms constitute biodiversity. क्या constitute करते हैं ये living organisms? Biodiversity बनाते हैं ये. We are land rich with flora and fauna, but due to urbanization and other reasons, trees are being cut down on a large scale. You have seen nowadays trees are being cutted on a large scale because of industrialization. People are putting their industries in the forest. People are building the buildings and apartments also. Animals are also hunted for their skins. Animals को किस लिए hunt किया जाता है? उनकी skins के लिए hunt किया जाता है. Due to this, we have possessed a threat to flora and fauna. Thus, it is very important to understand our activities that provide harm to flora and fauna and take certain steps. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए जो हमारी एक्टिविटीज अफेक्ट करती है फ्लोरा और फौना को, और उनके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. So in this chapter you will learn about deforestation, biodiversity and bioreserves. इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ोगे? डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे और बायोरिजर्व्स के बारे में पढ़ोगे. You would also learn about the conservation of forest and wildlife. किसके बारे में पढ़ोगे? आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को. In the later part of this chapter there will be discussion about endangered species and endemic species. later chapter में क्या आएगा? endangered species के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी species हमारी danger में है, and endemic species. Now let's talk about biodiversity. What do you mean by biodiversity? Earth is a land having living organisms like plants, animals, microbes, living in non-living surroundings of land, air and water. Earth क्या है? Earth is land having earthquake land is just क्या है? Living organisms रहते like plants है, animals and microbes है. तो living is microbes living in non-living surroundings में क्या है? हमारी land, air और water है. Plants are called flora and animals are called fauna. जो plants है हमारे flora है और animals हमारे fauna है. A region with a variety of living organisms like plants and animals live in an area called biodiversity. कहाँ पे रहते हैं plants और animals? एक area में, that is known as biodiversity. Now you could have find a large variety of plants and animals across the globe. आप देखेंगे different types of plants होते हैं, different type के animals होते हैं हमारे globe में. There is very large number of species of trees found in tropical forest. एक large number of species होती है, वो क्या है? हमारी trees की बहुत found होती है tropical forest में मिलती है. While a few plants in desert area too. जो कुछ plants होते हैं कहाँ पे मिलते हैं? desert area में भी मिलते हैं. There is rich variety of animals also. क्या है? rich variety है किसकी? animals की. From dinosaurs to rats, Earth have witnessed animals of all sizes. अर्थ ने क्या विटनेस करा? एंड डायनासोर्स कितने बड़े होते हैं, रेड कितना छोटा होता है. अर्थ पे सब साइजेस के एनिमल्स हैं. So, however many species of animals have come to an end of forever, still we have a large and rich variety of animal species. अब तक कितनी species खत्म भी हो चुकी है, फिर भी हमारे पास बहुत large variety of species है. India also has a rich variety of biodiversity. Rich variety of किसकी? biodiversity की इंडिया में. Thousands species of plants and animals are found in many areas. Thousand species होती है किसकी? plants की और animals की. कहाँ मिलती है? हमारे इन एरियाज में मिलती है. From the tropical rainforest to alpine vegetation and from temperate forest to coastal wetlands. क्या मिलता है? tropical rainforest से alpine vegetation से, from temperate forest से to coastal wetlands तक. India has got so many plants and animal species in various regions. इंडिया को क्या मिले? बहुत सारे different टाइप की plants और animal species मिले different regions में. Fact 5. There are 89 national parks and 492 wildlife sanctuaries in India. कितने national parks है? 89 national parks है और 492 wildlife sanctuaries है हमारे इंडिया में. Now let's talk about forest, the green boon. India's 1/5 of land is covered with forest. हमारे जो इंडिया का 1/5 land है वो किससे covered है? forest से. Having large variety number of trees of different species. different species की क्या? large variety of trees available है. Your teacher must have told you many times about the uses of forest and how they are necessary to keep
keeping the ecological balance. Yes. So this thus let us now revise again some benefits of forest. हम क्या पढ़ेंगे? कुछ benefits पढ़ेंगे forest के कि क्या क्या benefits होते हैं. Habitation. Forests provide habitat for various species of plants and animals. Forest में क्या होता है? बहुत सारे plants और animals को क्या होता है? Habitat मिलता है. So animals are dependent on forest for food and shelter. Animals किस पे dependent है? Forest पे dependent है अपने food के लिए और shelter के लिए. Trees products. The various products of trees like wood, timber, resin, gums, etc. are used for various purposes. जो various products होते हैं हमारे किसके trees की, जैसे हो गया wood हो गया, timber हो गया, resin हो गया, gums हो गया, वो हमारे हम यूज करते हैं किसके लिए? various purposes के लिए. Now let's talk about medication. Herbs of many plants are used for making many medicines which cures many diseases. जो herbs होती है बहुत सारे plants की, वो यूज होती है क्या बनाने की? बहुत सारे टाइप के मेडिसिन बनाने के लिए, बहुत सारी हमारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए. Now preventing soil erosion. How can you prevent the soil erosion? Trees help in preventing soil erosion by holding the roots of soil which prevent soil erosion. वो क्या करके रखते हैं? ट्रीज होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, और उससे क्या होता है? आपकी सॉइल इरोजन नहीं होती, सॉइल ब्लोन अवे नहीं होती, इजीली वॉश अवे भी नहीं होती. सो मेंटेनिंग क्लाइमेट्स ऑफ रीजन. ट्रीज क्या करते हैं? क्लाइमेट मेंटेन करके रखते हैं रीजन का. ट्रीज हेल्प इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. Now preventing global warming. Yes, trees absorb carbon dioxide which is greenhouse gas that cause global warming. Trees क्या करते हैं? Absorb कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, और क्या प्रिवेंट कर देते हैं? क्या कॉज करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कॉज, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी उसको प्रिवेंट करते हैं. So maintaining water table. Trees help in bringing rainfall and thus help in regulating water table. Trees help करते हैं रेनफॉल को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में, और हमारी वाटर टेबल को भी रेगुलेट करते हैं. So trees prepare their food and generate energy through a process known as photosynthesis. Yes, photosynthesis के थ्रू अपना trees क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं अपने foods को और अपनी living beings को, अपनी living को कंटिन्यू करते हैं. So and we find another process called transpiration. जो दूसरा प्रोसेस क्या मिलता है? ट्रांसपिरेशन मिलता है, through which it sends out the excess water. इससे क्या होता है? वो send out करता है किसको? एक्सेस वाटर को. किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में, थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस. तो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? उनकी लीफ के सरफेस पे. एंड दिस enables the rise in content of water vapor. क्या करता है? enable करता है rise किसके? जो कंटेंट होता है अपने वाटर वेपर का in the atmosphere, leading to precipitation in the form of rain. क्या होता है? precipitation होती है किस फॉर्म में? आपकी rain की फॉर्म में. Now let's talk about deforestation on next page. Deforestation is defined as massive cutting of trees, clearing of forest for use of land or for some purpose. इससे क्या होता है? massive cutting होती है आपकी trees की, clear होते हैं आपकी forest for use of land for some purpose. आप क्या करते हो? उस land को use करते हो अपने कुछ purposes के लिए. You know that with the rise in population, cities are getting overpopulated, so more and more of lands have become a need of today. Yes, population rise हो रही है, तो लोग रहेंगे कहाँ? they will need a place to live in. They will make their houses. कहाँ पे बनाएंगे? वो land ही available नहीं होगा. They will cut down the trees to make their houses. This requirement is fulfilled when forest land is cleared and urbanized. ये requirement कब fulfill होती है उनके housing की? जब forest land clear हो जाता है, urbanized हो जाता है. Deforestation affects ecosystem on a large extent. Yes, क्या affect करता है? Ecosystem को affect करता है large extent पे. So cause of deforestation क्या क्या है? Increasing demand of wood, paper and timber. Increase हो रही demand wood की, paper की और timber की. Increase in population result in requiring more land of for housing etc. which clears off the forest. से क्या करते हैं? Clear off कर देता है forest को. Lowering of water table. आपका water table lower होता जा रहा है. Increasing demand of land for industries, houses, roads etc. Increase हो रही है किसी demand industries की, houses की, roads की. Now however, sometimes human activities are not responsible for the clearing of forest. Yes, कभी-कभी human activities भी responsible नहीं होती clearing of forest के लिए. For example, forest fire and volcanic eruption which are natural disaster clear trees in bulk. जो forest fire हो जाती है, आग लग जाती है अभी forest में, उससे भी आपके trees clear हो जाते हैं. So आपकी जो volcanic eruption होता है उससे भी land clear हो जाता है bulk में. Now consequences of deforestation. क्या क्या consequences है deforestation के? Deforestation is a big threat to environment because it can lead to many problems like
Deforestation results in increasing amount of CO2, which eventually increases the temperature of planet and thus result in global warming. इससे क्या होता है, इंक्रीज करता है डिफोरेस्टेशन होगी, प्लांट्स नहीं होंगे तो किसका अमाउंट इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होता है. दिस विल इवेंचुअली इंक्रीज द, इससे क्या होता है, हमारा इवेंचुअली इंक्रीज होता है क्या, टेम्परेचर हमारे अर्थ का, हमारे ग्लोब का, और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है. So shortage of many useful product like gums, resins, timber, etc. इसकी shortage हो जाएगी gums की, resin की, timber की. Animals are dependent on forest for their habitation. Animals अपने housing facilities के लिए किस पे dependent है, forest पे depend रहते हैं. Thus deforestation affect wildlife. जो deforestation होता है क्या effect करता है, हमारे wildlife को effect करता है. Since forest prevents soil erosion, deforestation needs to wash away of soil, thus leading to soil erosion. फॉरेस्ट प्रिवेंट क्या करता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है. इससे क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, व्हिच विल लीड टू वॉश अवे. इससे क्या होता है, वॉश अवे हो जाती है आपकी सॉइल, इससे फिर सॉइल इरोजन आपका इंक्रीज हो जाता है. फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस. ये आपके एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. Thus absence of forest disrupts the environment. जब absence होता है किसका, फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर देता है, आपके एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी नेचुरल वेजिटेशन को. Water table is reduced as a result of lack of rainfall. वाटर टेबल क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है किसके रिजल्ट में, लैक ऑफ रेनफॉल की, मतलब जिसकी वजह से लैक ऑफ रेनफॉल हो जाती है. नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेज. हाउ कैन यू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड हाउ कैन यू मैनेज द थिंग्स. You know that without forest the environment will be hugely affected and ecological balance will be disturbed. जब फॉरेस्ट नहीं होगी तो आपका एनवायरमेंट इफेक्ट होगा, जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. Thus, it becomes our duty to conserve forests. In order to maintain the environmental balance, this can be achieved in the following ways. ये कुछ following ways में achieve हो सकता है. Like large scale cutting of forest trees should be prevented. जो large scale होते हैं, cutting होती है हमारे forest trees की, क्या होनी चाहिए, prevent हो जानी चाहिए. When trees are needed to be cut, make sure that at least twice the number of trees which were cut are grown. जब आप ट्रीज कट करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज के 2 गुना आपको ट्रीज ग्रो करने चाहिए. Thus forestation must be exercised regularly. जब forestation होती है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए आपको रेगुलरली. As an initiative to develop new forests, more saplings should be planted every year during rainy season. रेनी सीजन के टाइम पे आपको बहुत सारी सैपलिंग्स प्लांट करनी चाहिए, क्या इंक्रीज करने के लिए, फॉरेस्ट इंक्रीज करने के लिए. Overgrazing of by cattle and other animals should not be allowed. जो overgrazing होती है एनिमल्स की, कैटल की, वो अलाउड नहीं होनी चाहिए. The use of insecticides and pesticides should be minimized. यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का, ये क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए. Scientists should discover supplementary product which will release the huge dependence on trees for their product. साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए उसके सप्लीमेंट्री, उसके मतलब उसके सप्लीमेंट्री जो जैसे आपको टी पीनी होती है उसका सप्लीमेंट क्या है, दूसरा मतलब दैट इज कॉफी. आप कॉफी पी सकते हो. तो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए, डेवलप करने चाहिए, जिससे पीपल की डिपेंडेंसी कम हो जाए फॉरेस्ट पे. तो फॉरेस्ट फायर मस्ट बी प्रिवेंटेड. फॉरेस्ट फायर जो होनी चाहिए प्रिवेंट हो जानी चाहिए. अवॉइड स्मोकिंग और कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया. आपको स्मोकिंग और कुकिंग अवॉइड कर देनी चाहिए अपने फॉरेस्ट एरियाज में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ. Wildlife is a mixture of many species of different types of animals. क्या है, मिक्सचर आपकी बहुत सारी स्पीसीज में जो डिफरेंट टाइप्स की होती है एनिमल्स की. It includes all animals that live in various regions. क्या करता है, इंक्लूड करता है सारे एनिमल्स जो क्या रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं. India has a rich variety of wildlife that includes hundreds of species of animals like lion, tiger, python, snakes, etc. इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है किसकी, वाइल्ड लाइफ की. लायंस है, पाइथन्स है, टाइगर्स है, स्नेक्स हो गए. These species live across various parts of the country. जो है क्या कहाँ रहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में रहते हैं हमारी कंट्री के. But in the recent times, the population of wildlife species has been decreasing at an alarming rate. पॉपुलेशन हमारे वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज की वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है एक अलार्मिंग रेट पे. For some purpose, forests are cleared, which lead to loss of habitation. कुछ पर्पसेस के लिए क्या होता है, फॉरेस्ट अपने क्लियर हो जाता है, जो क्या होता है इसमें लीड करते हैं लॉस ऑफ हैबिटेशन में ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मेनी एनिमल्स डाई. इससे क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स आपके डाई हो जाते हैं. सब एनिमल्स आल्सो डाई ड्यू टू पॉल्यूशन. कुछ एनिमल्स आपके किस वजह से डाई, उनकी डेथ हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से, व्हिच इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. जो ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज करती है पॉल्यूशन, उससे एनिमल्स की डेथ हो जाती है. So in the direct or indirect manner, man is responsible for the death of many animal species.
या तो फिर डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो, किसी ना किसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे एनिमल्स की स्पीसीज की डेथ के लिए। सो दिस डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम ऑन लार्ज स्केल, इससे आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है बहुत सारे लार्ज स्केल पे। नाउ extinct species, let's talk about them. Extinct species are those species of animals that could not adjust themselves in the environment and have disappeared from earth. So extinct species क्या होती है, उन्होंने adjust नहीं कर पाए थे वो environment में, इसलिए वो disappear हो गए हमारे earth से due to some unfavorable condition which make animal of some species unable to survive. जो unfavorable conditions होते हैं उससे कुछ हमारी species survive नहीं कर पाती। As a result, some of the species are no longer present, जैसे डायनासोर्स हो गए आजकल प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अडेप्टेशन नहीं कर पाए थे। Some of the examples of extinct species are dinosaurs, Celtosbia, tarpon, etc. Now let's talk about endangered species. The species of animals that are on the verge of becoming extinct are called endangered species, जो अपनी एकदम सीमा रेखा पे अपने endangered मतलब बिल्कुल खत्म होने वाले, that are called endangered species, जो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, थोड़ी बहुत उनकी चीजें बची है, थोड़े बहुत एनिमल्स ही बचे हैं। The animals behind the endangering of species are unfavorable conditions or massive killing of animals. किस वजह से endanger हो रहे हैं? Unfavorable conditions की वजह से और massive killing होती है जो हमारे animals की। Sometimes the climate and environmental conditions are such that species of particular animal cannot survive and even reproduce. कुछ environmental conditions की वजह से जो animals adapt नहीं कर पाते अपने आप को different environment में, वो फिर survive नहीं कर पाते, इसलिए वो death हो जाती है उनकी। This results in lowering of animals. This results in lowering of number of animals which make them endangered species. वो क्या करते हैं, वो endangered species बनाते हैं। Sometimes the excessive killing of animals, जो excessive killing होती है किसकी, animals की, can also be the reason making them endangered. आप excessive killing करते, शिकार करते animals का, ये भी reason हो सकता है endangered के लिए। So excessive killing of animals disturb the food cycle which they are part of. तो क्या करते हैं, excessive killing disturb कर देती है आपकी food cycle को, जो part होता है उसके। Due to this, the animals keep on getting lower in number, making them endangered. इससे क्या होता है, animals आपके lower होते जा रहे हैं numbers में और वो endangered हो जाते हैं। For example, the Indian tigers are endangered species. Indian tigers क्या है, आपकी endangered species है, with their number just about 1000. उनका number क्या है, खाली 1000 में available है बस। Biosphere reserves, let's talk about them. क्या होता है biosphere reserve? Biosphere reserves are large area of land or water which is said to conserve the wildlife and maintain the ecosystem. ये क्या करता है, large area की land को और water को वो क्या करता है, conserve करता है आपकी wildlife को और maintain करता है आपके ecosystem को। It is controlled by the government of the country. आपकी government country की government इसको control करती है। The main function of biosphere reserve is to maintain and protect the world's plants and animals by providing them resources that they need and from human cruelty by restricting their activities in those areas. क्या करते हैं गवर्नमेंट, इसको biosphere reserve आपकी मेंटेन करती है, प्रोटेक्ट करती है आपके वर्ल्ड्स के प्लांट्स को, एनिमल्स को, क्या प्रोवाइड करके उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके जो उनकी लिविंग के लिए चाहिए होती है, और आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज को, जो ह्यूमन क्रुएल्टी से उनको बचाती है और एक्टिवेट कर देती है कुछ लॉस उस एरिया में। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। 3 पार्ट्स होते हैं इसके बायोस्फीयर रिजर्व के। फर्स्ट इज द कोर जोन which builds to conserve various biodiversity and protect all plants and animals. क्या करता है, बिल्ड करता है, कंजर्व करता है कि बायोडाइवर्सिटी को और प्रोटेक्ट करता है अपने प्लांट्स और एनिमल्स को। सेकंड इज द बफर जोन which is mainly for research and tourism purpose. बफर जोन क्या होता है, आपके रिसर्च और टूरिज्म पर्पस के लिए होता है। Third is the transition zone which is for the local authorities to manage resources of that area. Transition zone होता है जो क्या करता है, local authorities की मैनेज करता है resources को उस एरिया के। Now national parks and wildlife sanctuaries. National parks and wildlife sanctuaries are the piece of land. ये क्या piece है land के, which is reserved for the preservation and conservation of wildlife. क्या है, reserve है आपके preservation के लिए, conservation के लिए wildlife के। The main aim of these parks is to protect the wildlife species and provide those sufficient resources and habitation so they can survive freely. ये क्या करते हैं, इनका मेन वर्क क्या है, प्रोटेक्ट करना आपकी वाइल्ड स्पीसीज को और रिसोर्स प्रोवाइड करना इस हैबिटेशन में, तो सो दे कैन लिव।
so they can survive freely. There are many wildlife sanctuaries and national parks in India. Yes, बहुत सारी wildlife sanctuaries और national parks हमारे इंडिया में, with some even coexisting with each other. क्या करता है? coexist करता है एक दूसरे से. A large number of species of animals live in them. बहुत सारे large number of species रहती है इनमें. These animals live freely without any fear of hunting, and they are supplied with all essential resources to survive. फ्रीली रहते हैं यहाँ पे, कोई हंट नहीं करता और इन सारी रिसोर्सेज मिलते हैं सर्वाइवल के लिए. Any kind of deforestation and hunting is strictly prohibited in these areas. कोई भी हंटिंग या फिर कोई भी डिफॉरेस्टेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेबल होती है और यहाँ पे पनिशेबल भी होती है इन एरियाज में. एंड इफ फॉर्म गिल्टी स्ट्रिक्ट एक्शंस आर टेकन अगेंस्ट देम. और कोई मिल भी जाता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं. नाउ fact point J, it takes about 17 trees to make 1 ton of paper. 1 ton of paper को बनाने के लिए 17 trees लगते हैं. So you should not waste paper. So next time you tear a paper for misuse of paper, consider once what you are doing. एक बार सोचना कि आप क्या कर रहे हो. Endemic species क्या होती है? Sometimes you might have seen that a particular species are found in particular area and nowhere else. हमने देखा होगा कि कुछ स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती वो. These species are called endemic species. इन स्पीसीज को हम endemic species कहते हैं. These type of species are unique to particular region. ये particular region में मिलती है. And the reason for endemism are agriculture and urban growth. Now, red data book क्या है आपकी? Red data book is the record maintained by an organization named IUCN, that is International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. It is an initiative taken by the organization to highlight the species that are on the verge of becoming extinct. क्या करता है? हाईलाइट करते हैं उन स्पीसीज को जो किस पे वर्ल्ड पे बनने के जो एक्सटिंक्ट लेवल पे आ चुके हैं. So it helps in preserving and conserving wildlife. ये हेल्प करता है प्रिजर्व करने में और कंजर्व करने में आपकी वाइल्ड लाइफ को. IUCN develops and maintains a red list which keeps a track of all endangered species, and a red data book keeps a record of population data. एक लिस्ट बनाता है जो क्या रखता है? डेटा रखता है कि endangered species का, और एक बुक रिकॉर्ड भी होता है जो उनकी पॉपुलेशन स्टेटस को मेंटेन करता है of species that are included in the red list. So both the lists are maintained to show the risk of endangered species and evaluate measure to prevent them. दोनों लिस्ट क्या करती है? प्रोवाइड करती है एक डेटा गवर्नमेंट को, जिससे आपको एक डेटा मिल जाता है कि हाँ ये वाली स्पीसीज ज्यादा कम हो रही है, इस वाली को भी इन पे वर्क करना है. सो इससे आपकी endangered होने से स्पीसीज बच जाती है, एक्सटेंड होने से बच जाती है. So that's all for this lesson. I hope you will like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.